Hi guys, welcome back to my channel. My name is Navigators and that's me. So हम कहाँ हैं? हम हैं ताज महल पैलेस होटल, कोलाबा, मुंबई. So we are going to go inside the hotel. I'm going to show you the luxurious suite and everything. लेकिन पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा. So this is शामियाना रेस्टोरेंट. ये टावर विंग में है. तो बेसिकली ये होटल इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक टावर विंग है और एक जो हम ताज महल पैलेस होटल बोलते हैं. तो जब हम गए थे इट वाज बेसिकली क्रिसमस टाइम. सो यू कैन सी दैट्स डेकोरेटेड विद लाइक ऑल क्रिसमसी थिंग्स एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल क्रिसमस ट्री. मतलब कितना सुंदर लग रहा है ना. एनीवे तो मैं एक अच्छे टूर गाइड की तरह आपको थोड़े से फैक्ट्स बताती हूँ कि ताज महल पैलेस वाज बिल्ट इन 1903 और जो टावर विंग है जिसमें हम अभी हैं और हम इस हॉलवे से जा रहे हैं वो 1972 में बिल्ट हुआ था. तो दिस इज़ बेसिकली लाइक अ शॉपिंग आर्केड. आप देख सकते हैं आम्रपाली ज्वेलर्स का डिस्प्ले है और जो लोग यहाँ पे आए हैं उनकी पिक्चर्स है. दे हैव सो मेनी लग्जूरियस शोरूम्स लाइक लुई विटॉन, मॉन ब्लांक. और अगर आपको यहाँ पे शॉपिंग करनी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे रहना है तो ये आप शॉपिंग कर सकते हैं. वैसे भी जाकर यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं. सो बेसिकली द टावर पैलेस हैज़ अ लॉट ऑफ कैरेक्टर एज अपोज टू द टावर विंग विच इज़ लाइक मॉडर्न बिल्डिंग. थोड़ा ऑर्डिनरी है, थोड़े रूम स्मॉल है. सो बोथ आर क्वाइट डिस्टिंक्ट टू ईच अदर आर्किटेक्चरली एंड हिस्टोरिकली. अब हम जा रहे हैं एक्वेरियस रेस्टोरेंट. सो दिस इज़ बेसिकली लाइक पूल साइड रेस्टोरेंट है and you can see how it is like beautifully decorated with arches all over the place. Sorry for the lighting. हम रात को गए थे तो थोड़ा डार्क है बट प्लीज़ बेयर विद मी. जो टावर है इट हैज़ आर्च्ड बालकनीज. तो वो इनकॉर्पोरेट करता है उदयपुर स्टाइल पैनल्स एंड एवरीथिंग. जो टावर विंग था उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, उसको वो इतना डैमेज नहीं हुआ था. सो दैट वाज रीओपन्ड ऑन 21 December 2008. अब हम आ गए हैं टू द मेन मजेस्टिक, to the grand Taj Mahal Palace Hotel. And you can just look at this beautiful hand woven silk carpets, this cantilever stairway. इतना magnificent लगता है. Taj Mahal Palace has a rich blend of European and Islamic style architecture. आपने देखा होगा बाहर से there's a onion dome shaped. So these are all depicting Islamic architecture. And I'm an architect student, so हाँ तो मैं इसलिए आपको ये भी knowledge दे रही हूँ. As you know, unfortunately 2008 26 नवंबर को जो अटैक्स हुए थे वो बेसिकली उन्होंने ये जो एरिया है पैलेस वाला उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था. इसमें बहुत सारे पैसे लगे इसको रेनोवेट करने के लिए. अप्रॉक्सीमेटली $37 million एंड इसको 2 साल लग गए रेनोवेट होने के लिए. सो इट वॉज ओपन ऑन 15 August 2010 एंड नाउ वी एंटर the famous Rajput suite which goes as high as 10 lakh rupees per night. और कभी कभी ये 4-5 लाख का भी मिल जाता है. मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है इतना वेरिएशन ऑफ प्राइस बट या इट इज़ दैट. ये अलग से एक डाइनिंग एरिया था. येस आई डिड ट्रिप ओवर देयर बिकॉज इनका जो कारपेट था वो फोल्ड हुआ था. मतलब मैं इतने पैसे दे रही हूँ और आप कारपेट भी आप सही से नहीं बिछा रहे हो. दैट्स बैड. I'm just kidding guys. And this is the living room which has the peacock motif which is hand painted. It is so majestic. इसमें पूरी marble flooring है. इसमें traditional chevron design use किया हुआ है and it is smaller than the Tata Suite. This is around 1800 square feet whereas Tata Suite is around 5000 square feet. So this whole suite is designed to depict the life of the Rajput kings as you can see. अब हम चलते हैं रूम की तरफ. The room is really great. And it has this walk-in closet जहाँ आप लड़कियों को मिरर दे दो they won't just stop looking at themselves. Hence I am talking about me. I am that लड़की. जो पैलेस के स्वीट्स हैं मतलब इसमें 42 स्वीट्स हैं सबकी 19 of which have very different themes. यहाँ पे बहुत luxurious स्वीट्स हैं जैसे कि टाटा स्वीट, रेंशियल स्वीट. Each of the room and the suites are a perfect blend of the modern amenities and the bygone era. अब हम चलते हैं इसके बाथरूम में. And you can see there's this big tub and it has access from both the closet
as well as the bedroom. So Rajput suite is actually what you can imagine from a traditional Rajasthani palace. Just look at the study and then it has a Rajasthani झूला जिस पे मुझे डर लग रहा था कि मैं तोड़ ना दूँ बैठने में. इसको शीश महल स्टडी कहते हैं because it is studded with pieces of mirror. It has dome of mirrors. दिस इज़ माई रिएक्शन टू से कि बस ख़त्म हो गया, इतना सही था, मतलब इतने में इतना ही मिलेगा. एंड वी आर एंडिंग दिस ताज पैलेस होटल टूर विद द क्लब लाउंज. तो ये क्लब लाउंज है, वन ऑफ द फ्यू रेस्टोरेंट्स एंड ईट एंड हैव बूफे एंड एवरीथिंग. अगेन आई एम सॉरी फॉर द लाइटिंग, मेरा दोष नहीं है, इन सब होटल्स की लाइट ऐसी होती है तो आई कांट डू एनीथिंग. एंड दैट्स अबाउट इट यू गाइस. आई डोंट नो गाइस, वाज इट वर्थ द प्राइस और नॉट? You let me know in the comment section below. अगर आपको लगता है कि ये 10 लाख पर नाइट, या चलो अगर ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिले 5 लाख पर नाइट, so is it worth it or not? Anyway guys, hope you liked the video, and if you did, please do like, share, comment and subscribe to my channel. Until later, Navigators, XOXO. Mwah.